Hello, everyone. So please help me welcome Mr. Manoj Tiwari. He is a well-known name in the Indian diaspora in Maryland area, and not just Indian, but in society, he has made a name for himself. So I think I feel obligated to bring him on stage. Manoj is a semi-retired IT executive manager. He retired from his professional job and returned to work part-time, but he never retired from the theater. Since he started acting at a very young age at 6. That's amazing, incredible, Manoj. I don't know what I was doing at age 6. He has been a part of Natya Bharati since 1989, and he has served in many roles, including president and as a board of trustee since 2015. He now is a part of the governance team of Natya Bharati. Theater is a passion Manoj has pursued from an early age. He has participated in several plays and films for over 30 years in the Washington, D.C. metro area. And I have watched several of your plays, and you are indeed No. incredible. To him, theater is as much a part of life as we live and breathe. Manoj has ventured in short films as an actor and director. We're all actors and directors in some capacity, which is so true, Manoj. We are living in a story every moment. Some are immortalized through a play or a film, and some are just forgotten. Manoj is busy creating unforgettable stories every moment through theater, travels, writing, or socializing with friends and family. Coming to his theater life, theater is a passion Manoj pursued from an early age. He has participated in several plays and films for over 30 years in the Washington, D.C. metro area. To him, theater is as much a part of life, live, and breathe. We're all actors and directors, of course. And Manoj is busy creating stories even now. You have several uh, projects planned. Um, he recently directed a highly acclaimed Hindi musical drama, Ajir, and I was in the audience with many performances locally and in other locations. Lately, Manoj has ventured into short films as an actor and director. His directorial debut film, Let Me Flow, was screened in several film festivals. He acted in a short film called Margaret, played in over 50 film festivals across the globe. Wonderful. Recently, he has worked on 4 short films running through the festival circuit. Sorry. His blogs and other creative activities can be found on take2creations.com. I'll come back to Take Two later on. Yes. Yes. So he's got a long list of past theater film productions starting from 1994 till now. He was a director of Bhumika, Are Sharif Log, Na There Idhar are Ke too Naam many. Hai, Just ignore those. Mere Bache, The Interview, Tectonic Parkway, Spices and Echoes, Let Me Flow, Shaken, and he produced in 1992 Jisne Lahore Nahi Dekha, Ek Madhav Bagh, Save a Marriage Bureau, and Trikond Ka Chautha Kaun. The Interview, Let Me Flow, Stirred, Masoom, Murli Ki Mausi, Anji, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जिसने लाहौर नहीं देखा again in 92, Bagia Bacharam, Bacharam. Bacharam. That's a Bacha long list. You can ignore Bacharam, all that. Bacharam ki, okay. Yes. Bacharam. Bechare Bhagwan, Kasturi Mrig, Yayati, Where There Is a Will, Phool was a full-length film. Ron, Aadhe Adhure, Taconic Parkway, Soja Rajkumar, Jati Hi Pucho Sadhu Ki, Margaret, which was a short film, Ek Tara, Dirty Martini was a short film, and his most recent one is Missy, which was a short film. So Manoj, that is incredible. I mean, if I started to watch your films in your theater, it will take probably week to 2 weeks.
Leading the list. How do you Yeah. find time to do all this? Well, remember, this is not 1 week or 1 month's job. This is like 30 years of work that I've done in the Washington, D.C. area. True. And it's a lifelong passion. So, as you know, Sangeeta, very well, you have singing passion, and what you will do to make that true, right? Come true in your Yes, life. absolutely. So I've done exactly the same thing. I'm no different than what you have done. You have done so much more. I feel like that I have wasted half of my life doing nothing, basically. So I could have done a lot more, but Same hey, here, Manoj. I mean, I started in my second inning of my life, so, but no regrets. I think we're very happy yeah, whenever we started. I think we yeah, were ready for it when we yeah. started, so to So speak. interesting thing is that I started at very early age, and that's where हिंदी में कहते हैं ना कीड़ा जो लगा था कीड़ा वो लगा था पेट में। बचपन से लगा है। बचपन से लगा तो था। दैट वाज हुँ, तो बचपन से कीड़ा बचपन लगा था। बचपन हुँ, से कीड़ा लगा था। वो 5-6 साल की उम्र में वी यूज्ड टू हैव दिस one friend of mine who lived in my neighborhood. So two of us had this kira, and we would just he was a writer and I was like implementer or executor. So we will figure it ओह! out how to do this thing. So we'll take our bed sheet that we slept on, put it in our veranda on a rope, and call a few friends over and family, and we will do our short plays, skits or sketches, whatever you Oh, call it. wow. That's Yeah, so that's wonderful. how it That's started. Yeah. wonderful. And where So is that friend, by the way, now? Are it's you in, oh, still in he's touch? still in Kanpur actually. He lives in the same house where he lived when I left India. That was like 50 years ago. तो हो सकता है आप जाओ तो वो चादर ताने अभी भी इंतज़ार कर रहा होगा, मनोज आएगा तो हम प्रोडक्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट प्ले। Yeah, last time I went there, I met him and we had a good chat for an hour, sitting and reminiscing those old days of how we हुँ, started. So story goes कि वहां से we started, the two of us, and then we continued on. तो वरांडे से निकलकर it went to the gully level, right? It was long gully. उसमें we started doing रामायण. सात अच्छा, दिन की 7 दिन का की रामलीला हम लोग करते थे. क्या बात For है! and there were multiple actors, सारे अपने neighborhood मोहल्ले वाले. So ऑडियंस आती थी उसमें? सो यू अरे हैड उसमें तो ऑडियंस? देखो गली भर जाती थी. It was क्या like बात very popular because I lived in Kanpur. In Kanpur, very Hindi speaking kind of city, बिल्कुल, and बिल्कुल। lot टोटल, of टोटल lot कानपुर of तो इट्स लाइक बिल्कुल जिसे कहते हैं लठमार भी होता है। इट्स टोटल exactly. हिन हाँ, टोटल हिंदी हिंदी लठमार वाली बिल्कुल. हिंदी And and they really enjoyed it. Every citizen of Kanpur, I would say, was so much immersed in Ramayana and Mahabharata and all these kind of things. Ki Ramlila was a very popular thing back in those days. So बैक we इन used to दोज़ do डेज़ that भी during जाती थी। summer break. जी, भयंकर गर्मियों में हाँ, we used to collect donations and go and do this Ramlila for 7 days. Or वाओ! interesting thing was कि there were no female actresses, right? Back in हाँ those जी, अपने मोहल्ले में लड़कियां कहाँ मिलती थी नहीं, या मिलती बहनें भी थी बहन तो वो इतनी आगे नहीं आती थी कि वो इतना हाँ, फ़ील करें कि जगह-जगह घूम के सड़क पे हाँ, शोज़ कर दें, सवाल ही नहीं राइट। पैदा होता. तो जी, लड़कों से लड़कियों का रोल करवाते थे. हाँ जी। तो आप कभी बने लड़की लड़की बनी हाँ, कभी हाँ. सीरियल में आपने? I, you will not believe I was famous for two roles from that Ramlila. One was Dashrath. Nobody could आई do वाज़ गोना Dashrath से after दैट मुझे that. लग रहा था दशरथ और सीता का रोल आपने किया होगा। नहीं, दशरथ का रोल मैंने हमेशा किया. दूसरा सूपन खां का मैंने किया. अच्छा, सूपन खां आपकी नाक was लंबी है इसलिए? हाँ, नाक आपकी इसीलिए लंबी, नाक नाक लंबी है लंबी इसीलिए वो रोल मिलता था. दैट्स इंटरेस्टिंग एंड और हम लोग जब देखने जाते थे रामलीला, मज़े की बात ये है कि वो जो कैरेक्टर्स होते थे, हम उन्हें वाक़ई में राम, लक्ष्मण, सीता मानते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मानने लगते थे लोग. जी, राम जो मेरा फ्रेंड था वो हमेशा राम का रोल लेता था. तो हाँ, हाँ, इसीलिए दैट्स व्हाई ही वाज अगुआ इन एवरीथिंग. मैंने कहा चल ठीक है, हाँ। बिकॉज ही यूज्ड टू राइट. तो पीपल यूज्ड टू लाइक लुक एट हिम लाइक वेरी, जैसे होता है ना, धार्मिक बंदा होगा ये, हाँ बड़ा ही जी, मतलब राम जैसा ही होगा. ये तो राम पता जैसे था कि वो उसका वो बंदा अपने मोहल्ले का है, लेकिन
कम से कम उसे धार्मिकता से देखते थे। देखते तो ही कई कुड लोगों की डू लाइफ मोर भी राइट। बदल जाती है ऐसे रोल करते-करते। जैसे हमारे यस, अरुण गोविल जी की बदली, अरुण गोविल जी काम बना की। दिया उनको। सिगरेट छुड़वा दी उनकी। जी, आई नो। राइट। यस। मनोज, अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, लेट्स से मनोज तिवारी इज़ कमिंग ऑन द स्टेज, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस somebody named Manoj Tiwari? Somebody named Manoj Tiwari. Manoj Tiwari is a very simple man. Uh, a, I personally do not think of myself as like I have horns or anything. I am a very simple man. I love and I just enjoy life. The only thing I like about myself is whatever I do with passion. तो जो भी मुझे जिस काम में भी मैं लगता हूँ वो मैं पैशन से करता हूँ एंड एंजॉय। मुझे कोई चीज खराब नहीं लगती है। आप मुझसे झाड़ मैंने सारी उम्र जैसे स्टेजेस पे एक्टर्स लोग ये बोझा उठाने का काम नहीं करते थे, राइट? झाड़ू लगाने का काम स्टेज में नहीं करते थे। आई ओपनली यूज्ड टू डू दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज आई वाज सो पैशनेट। अब जो बंदा अपनी बेडशीट लाके उसका पर्दा बना के टांग रहा है उसको झाड़ू लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। So I like I am very passionate in many ways. So whatever I take upon myself, I enjoy it with passion. So I also have no boundaries. मेरा ऐसा नहीं है कि I have अच्छा नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो यही करूंगा या इससे ज्यादा मुझे नहीं करना ये। I get हुँ, into anything. आप मुझको बोलो कि अच्छा यार सर्जरी सीख लो तो मैं सर्जरी भी सीख लूंगा। तो दैट्स मुझे कोई प्रॉब्लम इनक्रेडिबल, नहीं। I दैट्स इनक्रेडिबल। love to learn any new thing and love to travel. I love learning about cultures. That's my passion. Also another passion. जी, मैं जाता हूँ दुनिया देखने जितना भी टाइम मिलता है मैं अपना लोकली घूम लेता हूँ जाके एक एक फूल भी देख लेता हूँ। तो आई whatever I do or whatever I get involved in, I do it with full passion. फुल उसके लिए पैशन। कभी मुझे दुख नहीं होता। हुँ, ये नहीं कि अरे यार यहाँ क्यों चले गए। आई यूजुअली टेल पीपल कि मुझे आप एयरपोर्ट पे 6 घंटे बिठा दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बी टोटली हैप्पी जस्ट ऑब्जर्विंग पीपल हुँ, और जस्ट डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग देयर। वहां पिक्चरें भी ले लेंगे वो भी कर लेंगे। हुँ, हुँ। तो आई एंजॉय लाइफ। आई फेल्ट दैट कि जिंदगी में नेगेटिव होके कुछ नहीं मिला। तो जो है उसको एक्सेप्ट कर लो एंड जस्ट एंजॉय इट। सो दैट्स व्हाट मनोज तिवारी इज राइट नाउ। What दैट्स I was, इनक्रेडिबल। I don't know. हाँ, नहीं इसीलिए सी हर इंसान के ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आता है जब उसने लाइफ़ में बहुत कुछ देख लिया होता है, सीख Hmm. लिया होता है और शायद ये हाँ, आई बिलीव इन लाइक हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कि जितना आपको एक्सपीरियंस लेना है इस लाइफ़ में, वो आप Hmm. लोगे एंड अ टाइम कम्स व्हेन गॉड सेज ओके नाउ यू आर फ्री। Yes, यस, yes, सो आपकी yes. कुंडली में एक टाइम वो आता है व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द Hmm. योर पास्ट लाइफ एंड देन Hmm. यू आर फ्री टू रोम अबाउट एंड डू एनीथिंग दैट you are a content person. You Right. don't need people to entertain you. You don't need people to spend time with to make you happy. You are a very, and that's what separates Manoj Tiwari from the masses. Yeah. Your artistic nature probably emerges from that um, personality of yours that you I carry around. think I think it. I give credit to my mother for a lot of things. The two things that I learned, which I didn't realize it early on. पहले जब बड़े हो रहे थे, or even in my 30s, 40s, I didn't realize what I gained from her. And now I realize it अभी बातें करने में, and I give thanks to her for a lot of things. There are a couple of things I would say I picked up from her, maybe genetic or maybe just observing. Two things she didn't have or she followed. One was no fear. She had no fear of anything. उनको कहीं भी कैसे भी हालत में कैसे भी भेज दो. She will Mhm, not have a rupee and she will go out to America. तो उस तरह की लेडी थी. So no fear was one thing I learned very late in life. And not that I was fearful, but when you are growing up and all these kind of, there are fears about life, what you will happen in future and all that. तो एक टाइम पे मैंने डिसाइड किया आई एम नॉट गोना हैव एनी फियर्स, राइट? दैट फ्रीड मी सो मच। आई मीन टोटल फ्रीडम जो मुझे मिली है दिमागी तौर पे,
And that's what caused me to learn how to be happy. And I said, I have nothing to lose, so I'm happy, right? They're wonderful. Fears cause all these things that restrict you, bound you in many Exactly. ways. है ना? Fear of losing, fear of Fear of losing something. yes. I have a fear of losing nothing really. I have nothing. I मेरे घर में दरवाजा खुला पड़ा रहता है, आ जाए कोई आ जाए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मेरे क्या ले जाएगा, मेरा लैंप, टीवी, Mhm, दे आर ऑल रिप्लेसेबल. तो mhm. आई हैव only this one phone which has my credit card, phone, and driver's license, and As that's long all as we फ़ोन ना लेके जाए, बस कुछ और फोन ले ना लेके जाए। जाए. फ़ोन ना फोन लेके लेके जाने 2-3 हफ्ते लग जाते हैं रिप्लेस करने में. जी। That's all. To retrieve all that data But and material that you have saved in your phone. yeah, फ़ोन ना I लेके have जाए। I have no other issues. आप मेरी जिंदगी से कुछ भी ले लो, I will have no regrets. I will have no qualms about it. I will have no problems at all. तो That's वो good and फेथ ये में पहुंच लोगों गए. को भी सिखा सकते हैं हम कि your fear comes from I mean owning a lot हाँ, and then of losing them. राइट. So अपनी बहुत अच्छी बात सोच कही. और मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है उसको थोड़ी कम करें, you don't have that fear of losing लूजिंग anything. इट. That's राइट. incredible. Hats off to your mother for um, यस. raising a यस. kid like you. तो इंडिया सी. मनोज जी आजकल बहुत बदल चुका है आई नो व्हाट वाज इंडिया लाइक जब मनोज तिवारी छोटा बच्चा था मनोज को जब समझ आई कि जिंदगी क्या होती है या लुकिंग अराउंड how do you see India was like back then you can now look back and see कि हमारे ज़माना इस जब ऐसा कुछ होता था जो अब नहीं है या कुछ नहीं होता था जो अब है तो बट इन इंडिया इन जनरल हाउ डू इट In India, as in general, has changed quite a bit, right? 50 साल में किसी भी देश में आप चले जाओ, आपको जी लगेगा कि हाँ, ये तो बदल गए. तो ऑफ कोर्स जी एक दो चार चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं. एक तो जो इसका कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म हम्म हमारे टाइम पे नहीं होता था. वी हैड जी सोशलिस्टिक सोसाइटी, राइट, जहाँ सब कुछ अपना है. तो और कुछ भी अपना नहीं है. तो वी ग्रू अप इन वेरी मॉडेस्ट हाउस होल्ड. मेरे हम्म पिताजी टीचर थे, मेरी माँ होम मेकर थी. So we didn't have much to start with, but we had a family. We had family our own by birth, by genes, uh, हम्म relatives, and we had our neighborhood. तो यस हिंदुस्तान में हम लोग कहते थे कि बच्चे तो पड़ोसियों अपने गली में पलते हैं, घर में कोई बच्चा नहीं पलता है, घर में टोटली जाते हैं सोने के लिए, है ना. जी जी वो तो खत्म ही हो गया है. हाँ अब दैट नहीं है वो तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा सेफ्टी होता. नहीं रही है सेफ्टी नहीं हाँ, है ना आज सेफ्टी नहीं, बच्चों को बहुत छोड़ सारी के राइट लोगों की थिंकिंग बदल गई है ना. हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड इट, राइट. राइट अब लोगों को आपस में मिलके खेलने की, बातें करने की, एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने की जरूरत ही नहीं बची है. जरूरत नहीं Because है people हाँ have phones, people have हाँ, video वो games, people सतोलिया have नहीं खेलते बच्चे बैठ के, सतोलिया क्रिकेट नहीं खेलते, वो काउच पे बैठकर वीडियो गेम्स खेल लेते हैं। exactly. सेफ्टी आल्सो हैज़ अ लॉट टू डू विद Safety has इट a lot to do with it. क्योंकि Yes. बाहर बच्चे को छोड़ दो क 4 घंटे बाद जाओ तो मिलेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन सही तो ऑनेस्टली बताऊं, सेफ्टी इज जस्ट एन एक्सक्यूज. आई टेल यू, सेफ्टी इज एन एक्सक्यूज. हाँ, there are other issues, child abuse issues, and those kind of हुँ, things are still there, I'm sure, यस। no doubt about that, uh, which were there before also. हुँ, And हुँ। if I can be candid, and this is a candid show, नहीं, तो ऐसे but सही बात है, वो होता है। यस, तो चाइल्ड अब्यूज पहले भी होता था, जी, चाइल्ड अब्यूज अभी भी होता है, जी। लेकिन लोगों में उतना डर नहीं था कि हुँ, जैसे अब तो मतलब बच्चों को घर से बाहर पैर नहीं रखने देते हैं क्योंकि टेम्परेचर 90 डिग्रीज के ऊपर है ना. सर्दी लग जाएगी बच्चे बच्चे को. पॉलेंस आजकल बहुत बॉदर हाँ, कर रहे हैं बच्चे को जी, स्कूल जाना है हाँ, और उसका क्लास है और ये है वो है. तो सोसाइटी हैज चेंज्ड, सो हुँ, कैपिटलिज्म हैज टोटली चेंज्ड इंडियन चेंज सोसाइटी. the या fabric of या India. द The फैब्रिक ऑफ इंडिया. biblical, I agree with you. Some changes. Also, competition इतना बढ़ गया है कि 4 साल के बच्चा भी ट्यूशन लेने जाता है।
Great. स्कूल Exactly. एडमिशन, फॉर स्कूल Exactly. एडमिशन Yep. इतना कंपटीशन है, 99% 100% मार्क्स आ गए तो भी Yeah. एडमिशन मिले ज़रूरी नहीं Exactly. है। तो आई Exactly. थिंक लॉट ऑफ दोज़ थिंग्स हैव चेंज्ड। हमारे ज़माने में Yeah. तो किसी के फर्स्ट डिवीज़न उस वक़्त बड़ा माना जाता था कि 60% से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। I know. तो फिर एक ऑनर्स था जो हाँ, 75% पे आता था और आजकल तो आई 25%. थिंक दैट्स ऑब्सोलीट नाउ, फर्स्ट Yeah. डिवीज़न वो तो ऑनर्स yep. Yep. पिछले Interesting story. पिछली सदी की बात है। Interesting या story on that. First division से याद आ गया मुझे. I was very mediocre in academically speaking. हुँ, मेरा सारा ध्यान सारे टाइम खेलने में और ये ड्रामे में लगा रहता था. तो मुझे बाहर भेज दिया जाता था कि कानपुर से बाहर भेज दो तो लड़का थोड़ा ठीक रहेगा. हुँ, Kind of like रिश्तेदार होने का. But anyway, somehow, totally unexpectedly, I got first division in high school board exam. कांग्रेचुलेशंस। First time ever. And I had no idea how did that happen. And I got distinction, what you were saying, on honors in couple of subjects. And I said, वाओ! wow, how did that happen? I had no idea. And हमारे घर वाले विश्वास नहीं कर रहे थे. तो first division 60% marks was a big deal, right? बिग डील, यस, तो टोटली। उस वो यादें अभी भी लेके बैठा हूँ कि यार एक बार जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन आई थी. नहीं तो वो उसके तो बाद कभी नहीं. दैट्स इनक्रेडिबल, वो बहुत मुश्किल होता था वो फर्स्ट डिवीज़न लाना, जबकि इतने ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते थे, पेज भर के हाँ, बाद पेज भरते रहो एंड राइट, थोड़ा कंटेंट एग्जैक्टली. भी कोर्स लिखना नहीं, दैट इज़ गुड। चलिए वी दैट्स अ थिंग टू सेलिब्रेट मनोज। दैट्स अ थिंग टू कोई रिग्रेट है लाइफ में? व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? रिग्रेट, आई वुड से कि मुझे मेच्योरिटी काफी देर में आई. अगर थोड़ी जो मेच्योरिटी है मुझे थोड़ी पहले आ गई होती. व्हेन आई वाज, आज के बच्चों को मैं देखता हूँ जैसे दे आर सो मच मेच्योर, इतने पढ़े लिखे. मुझे तो मतलब अपने ग्रैंड किड्स को देख के मुझे लगता है यार काश मैं आज ऐसा हो पाऊं जितना इन लोग. हाउ मच maturity they bring because of whatever reason, maybe it's in the air, whatever it is. हम लोग बच्चे थे तो नाइव बहुत थे, सारी चीजें इनोसेंट। जिंदगी में जो मैं कर सकता था वो मैंने नहीं करी. I probably could have done much more, could हुँ, have हुँ, been could have gone in different direction altogether, could have हुँ, हुँ, recovered some of the lost time that I had. वो जो मेरा लॉस्ट टाइम है उसका मुझे रिग्रेट है बस, हुँ। कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपनी जिंदगी में जो मैं बहुत कुछ कर सकता था. सिंस लेकिन इट्स अ वो कैंडिड शो, क्या करना चाहते थे जो आपको लगता है कि जो आपने नहीं किया? तो जैसे मुझे ये समझ नहीं थी, जैसे हाई स्कूल का एग्जाम्पल दिया मैंने, राइट. हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गई, माँ बाप ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कि ये तू डॉक्टर बन जा, है ना. तो मैं डॉक्टरी पढ़ने लगा. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा डॉक्टरी में कोई वो था ही नहीं इंटरेस्ट, बिकॉज आपने बायोलॉजी डॉक्टरी में पढ़नी शुरू करी थी? मैं, हाँ हाँ, मैंने पीएमटी मैंने 3 बार दिया था, 1 नंबर से रह गया था. लेकिन लेकिन मुझे प्रॉब्लम जो बाद में पता चली कि मेरी याददाश्त इतनी खराब थी, आई कुड नॉट मारो रट्टा. एंड आई वाज हुँ, सो हुँ, गुड इन मैथ एंड फिजिक्स बिकॉज हुँ, दे हुँ, वर वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट्स, राइट. तो वो अगर मुझे इतनी समझ होती या इतना वो होता कॉन्फिडेंस की अपने उस पे, नहीं मैं मुझे इस सब्जेक्ट में नहीं, इस फील्ड में जाना है, उसी समय ये तो मैं हुँ, इंजीनियरिंग परस्यू कर लेता, विच आई डिडंट. वो हुँ। बीएससी जाके फिर मेरी समझ में आया कि यार ये तो गलत सब्जेक्ट, गलत लाइन में आ गए. तो इट वाज टू लेट बाय देन, टू राइट. लेट, व्हिच राइट, आई चेंज्ड राइट। लेटर ऑन आफ्टर आई केम हियर. लेकिन इंडिया में उससे रिकवर करने का कोई रास्ता ही नहीं था. नहीं होता था, राइट, Even राइट। after coming here, हुँ, हुँ, there were a couple of opportunities I could have हुँ, हुँ, pursued and become entrepreneur. हुँ, I हुँ, didn't because of justifying for with number of राइट, ways reasons, but I didn't. Eventually, it was या my risk. तो एक मेच्योरिटी लेवल होता है ना, एक समझ में कि नहीं हुँ, यार आज हम कल भूखे रह लेंगे, but I must हुँ, pursue because it will have a longer term हुँ, benefits which I could not see back then. उस समय राइट,
यार आज हमें ये करना है, पर कल बिल भरना है, परसों ये बच्चे को पढ़ाना है, तो वो राइट, सब राइट, लेके we couldn't pursue. राइट, So that's राइट, my only regret. राइट, राइट। नहीं, ऐसा होता है कई बार कि हम कुछ करना चाहते हैं बहुत बाद में, जैसे आपने कहा मैच्योरिटी बाद में आती है ना। आई थिंक यू रिप्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ द किड्स ऑफ दैट एरा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होते थे, और हम लोग को जो पेरेंट्स कहते थे दैट वाज द अल्टीमेट, Exactly. कि आप हाई Exactly. स्कूल यहाँ जाना है आपको, कॉलेज यहाँ जाना है, शादी यहाँ करनी है, जॉब वहाँ Yeah, शुरू करनी है। सो यू हैड नो लाइक योर ओन थॉट प्रोसेस आल्सो, exactly. कि ये सब Exactly. आपको करना है। Yeah. राइट। बट आई गेस जिस डायरेक्शन में आपको जाना था, इवेंचुअली गॉड ब्रॉट यू देयर, or the Yes. circumstances and your mehnat, everything Yes. just kind of worked in your favor eventually. Eventually Second it did decade, work. second inning of your life may Yes. have been more Exactly. beautiful. So I guess it's a part of life. But moving Yeah. forward, people can learn from you that guide the kids based upon what their Good, capacity good. is, और Right. वो क्या करना चाहते हैं। Back in Exactly. India, during those days, I think limited बहुत थे प्रोफेशंस, Was either limited, हाँ, डॉक्टर, professions were इंजीनियर। limited. हमारे Yes. ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये 3 Yeah. होते थे या टीचर होते थे। तो Yeah. आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, Yes. तो आई गेस Yeah. पेरेंट्स कैन बी मोर ओपन अबाउट अ लॉट ऑफ अगर ऑप्शंस। या अगर आजकल का टाइम होता तो मैं एनएसडी चला जाता कोशिश करके। आई नो, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। क कभी आपको लगता है कि मनोज को लोग समझ नहीं पाते हैं, और दे मिसअंडरस्टैंड मनोज, कि मनोज जो है वो लोगों को नज़र नहीं आता? डू यू थिंक दैट हैपेंस विथ यू? I No, I don't think so. I think uh, हुँ, maybe because the way I represent myself, I present myself to my friends and family and colleagues. I'm an open book. तो आई डोंट फील कि अच्छा नहीं लोग समझते नहीं है या मेरे बारे में गलत वो लगाया हुआ है। आई मीन ऐसे तो हर इवेंचुअली योर इमेज इज परसेप्शन ऑफ अदर्स, राइट? टोटली, तो टोट लोगों के परसेप्शन कैसे होंगे, क्यों होंगे, उनके अपने रीजंस हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कोई लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा हुआ है या कुछ, या मैंने अपना मास्क चढ़ाया हुआ है कि नहीं मैं तो ये हूं लेकिन अंदर से ये हूं। तो आई हुँ, आई आई एम वेरी ओपन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ छुपा नहीं है। आई एम श्योर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट ब्रिंग आउट पब्लिकली, बट मोस्ट ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल नो एवरीथिंग, दे सो नो यू। देयर इज नथिंग हिडन। सो कभी ऐसा लगा कि मनोज बहुत आर्टिस्टिकली सीरियस है, लेकिन लोग आपसे थोड़ा-सा घबराते हों, डरते हों अप्रोच करने में, कि भई ये बड़ा सीरियस बंदा है, इसको उल्टा है। इसका उल्टा। उल्टा है। अच्छा। People don't take me seriously. That's the problem. So that's the image. That's the image I need to work on. तो आप सीरियस बनना चाहते हैं? Seriously, yeah. The thing is, one one thing I learned through profession or living alone, whatever, working here in the US, शुरू में, I learned to mold myself more according to the circumstances, right? According to the situation. तो उसमें ये होता था कि जिस भी कंपनी में मैं हूं, आई एम वेरी मच लाइक देम, राइट? आई डोंट, नहीं मैं तो ये हूं तो मुझे इस तरह ट्रीट करो। आई नेवर वाज लाइक दैट। आई वाज वेरी हुँ, अडेप्टेबल। तो उसकी वजह से मुझे इन सब चीजों में कभी परेशानी नहीं हुई। या सीरियसली स्पीकिंग, पीपल डोंट टेक मी सीरियसली until I act seriously, right? हुँ, So, I generally don't think why we are stuck up on things, right? I'm not stuck up. I am totally open. खुल के बात करो, हंसो, गाओ, जो भी करना है। गो विथ द Stuck up, फ्लो। go with the flow. I'm stuck up on certain things, right? Certain things that bother me, right? जैसे? People's uh, people's hypocrisies, people's bad behaviors, right?
when somebody's behavior is hurting someone, right? कोई Hmm. चोरी करके आपका सामान ले जा रहा है, you are hurting somebody, right? Mhm. That will that bothers me. I'm I'm not talking about in literally In its literal real concept. sense, Yeah, yes, I yeah, see it. It is a yeah. metaphor, like, Metaphor. This is yeah, metaphor, right? तो yes. मुझे मुझे उन सब चीजों में लोगों की हिपोक्रेसी, हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ स्किन के रहे नीचे हो। कुछ हो रहा है ना? आई नो, पता है कि आप कितने पानी में हो, है ना? जी, और आप बड़ी बड़ी शेखियां बघार रहे हो, और मुझे इट बॉदर्स मी सो true. certain values. I don't like hurting people Mhm. intentionally, right? Right. Knowingly. When I know, intention is one thing, but knowing also another thing, right? Mhm. If I know that this thing is going to hurt somebody, then I will avoid doing that, right? At least Right. uske samne, yeah, something that will bother that person in front of me. So when I see people keep on doing those kind of things, people know that, hey, this is gonna hurt somebody, this is bothering somebody. Why are you doing that, right? That's one thing bothers me a lot. Second thing bothers me, negative attitude in life. Mhm. जनरली जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, यार मेरी जिंदगी में तो ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने मेरा पैसा छीन लिया. आई डोंट लाइक दैट. आई नो सबकी जिंदगी में किसी ने कुछ छीना होता है. आई हैव Mhm. लॉस्ट थिंग्स आल्सो, राइट? लेकिन Right. उसको लेके कब तक रोते रहोगे, है ना? Right. तो you have to get out of. So I believe in rising above your losses, rising above Mhm. what you could not have. We all could not have everything in life, but Right. Mm, we made the best out of those things. So true. that's why I don't like being staying negative. So some Mhm. people maybe do that because it becomes their habit. They have nothing to lose, but they still keep on complaining that अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया. So those kind of things bother me. Otherwise, I have no problem. या मे बी उन जीवन में भी कभी ऐसा समय आएगा जब when they will get over it and they will be Right, content within right, themselves that the right, losses don't bother them as much. right. um, और मे बी वो आप में एक वो कोई गुरु देखते हैं या प्रीचर देखते होंगे कि मनोज से बात करके मुझे थोड़ी सी सुकून मिलेगा, तो आप एक्चुअली उससे बात से ध्यान आया, सोशल मीडिया पे लोग आपको मनोज आनंदा के नाम से भी बुलाते थे। अभी आपका सोशल मीडिया काफ़ी कम हो गया है। सो हाँ. आपकी preachings and yes, I was following all your posts and quite interesting thought process. एक्चुअली लोग नहीं बुलाते थे, वो मैंने खुद किया था. अच्छा खुद खुद किया that's था. very nice. आई टेल यू व्हाई. आई टेल यू व्हाई. होता ये था सोशल मीडिया में कि लोग दूसरों के कोट्स ला ला के, अच्छा बाबा गुरु इन्होंने ये कहा, बाबा उन्होंने ये कहा, हुँ, सब लगाया करते थे, राइट? हुँ, हुँ, मैंने कहा यार यही बात जब मैं बोलता कोई सुनता ही नहीं है. हुँ, आई एम सेइंग द वाह! सेम थिंग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग डिफरेंट, राइट? हुँ, हुँ, It's हुँ, a matter of person understanding it and adopting it in their lives. That's important, right? तो it's मैंने कहा more. ऐसा करता हूँ, यही हुँ, बातें जो मैं खुद बोलता हूँ उसको बड़े बड़े फ्रेजेस में और हुँ, मनोजानंदा के नाम से मैं करने लगा. It was see, a so it that was a that satire. was the birth of मनोज आनंदा आपका इट्स नहीं It अच्छा was a था वो भी satire and all. अच्छा हाँ जी, नहीं अच्छा होता है। कई बार हम लोगों को सोशल मीडिया पे ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कई बार जब आप when there is a lot of turmoil in the society, so Right. किसी न किसी को एक लीड लेके ये सब ना पड़ता है। बट ये कितने लोग उसे ग्रास्प करते हैं ये दैट्स अनदर स्टोरी। Hmm. सो Hmm. that brings the next question. If you could go back in time and would Hmm. change one thing, what would it be? Apart from what you told me that you would have changed your career and all, ऐसी Hmm. चीज जो मनोज can go back in like time और वो बदल लेता अपनी लाइफ में कि आप ही की लाइफ में, yes, so we're हमारी talking लाइफ about में, मनोज, या yes.
if I could change one thing in my life, I would probably go into deeper level of engineering. I never did engineering, so I did information science. Mhm. में मैंने masters किया, लेकिन I would go into engineering and want to learn so much about engineering concepts. I don't have the concepts, and that's what I want to learn. I think that would help me still, just for my curiosity's sake. There are Mhm. so many things I wish I could do or I want to do or learn about. I think that's where my tendency is, learning about how to make things, how to break things, or those kind of things. So Mhm. that's something I would change in my life. Do you think that would have changed your path now, or would Manoj be who you are today had you pursued your engineering at that time? Yeah, I think it would have changed my path. I think that would have created a different path in the path that I started going in my professional career at some point, but it would have taken me much longer way, a different path, a much deeper way that I really wanted to go. Mhm. But I That's didn't have a nice. recourse to come Mhm. back to say, hey, let me finish my engineering and then Hmm. start my career again. That I didn't have time for. It was Right. kind of late with all the life moving on. So Right. that's what I think would have changed my path a little bit in the same direction, but a little detour, which goes Detour. takes you to Right. higher levels. Possible. पॉसिबल जैसे कि हम फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट ऐसी Mhm. कोई होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दैट कैन read your past and what you would have done things differently Right. and then project your future from it जैसे एज प्रोग्रेशन है ना पुलिस फाइल्स में कि ये बच्चा तब ऐसा Yes. दिखता था 60 years का अब ऐसा दिखता होगा so maybe they can do a career progression if had What Manoj gone into that engineering what a great idea, yeah, Sangeeta. I uh, really love well, that idea. maybe you should work on it. Maybe Yes, you we should should do work on something that. like that. Yeah, So career path and then okay, then job and where it takes you. Yeah, we should exactly. invest in that. Maybe somebody who is listening to the podcast and who has that much technical intelligence more than I do, maybe they can work on that. तो Exactly. इससे Yeah. लोगों के काफ़ी सवाल जवाब जो हैं वो उनको Yeah. मिल जाएँगे कि अगर मैं It's इंजीनियर या मैं डॉक्टर नहीं बनती, तो मेरी लाइफ right. कैसी होती? कैसी होती? अगर सिंगर बनते, if you had pursued just a singing career, where हाँ, would it पता have नहीं taken कैसा you? होता क्या कैसा पता? होता? नहीं, हाँ, That would be a nice AI app to develop. एब्सोल्युटली, ओह माय Calling on गॉड! all the AI programmers to यस, जो ये call सुन us. रहे हैं आज प्लीज़ लिसन दिस ब्रॉडकास्ट एंड फिगर आउट अ वे टू डू दैट. दैट्स Yes, अमेजिंग. yes, गुड, yes. great. Maybe some engineering minded people are come up with something like that. Yes. Great idea. Great idea. Good. Biggest compliment that Manoj Tiwari has ever received जिससे आपको ये लगे कि oh my God. I don't know compliment or not, but coincidence, कह लो, not because I did anything. I had nothing to do with it, but compliments I got couple of times. एक बार हम कहीं वेकेशन पे थे, काबो में or something, and I was at this resort, and there was a lady who came over and said, "Can I have an autograph?" What? Who? Who's this lady? How does she know me? I Hmm. got little taken aback. She said, "You're Jeff Goldblum, right?" I said, "What?" Amazing. That's amazing. And she would not leave me alone for 10, 15 minutes. She Wow. left and then came back. She said, "You are kidding, right?" I said, "No, I'm not kidding you." She But thought you were evading and you were just pretending then, to be Manoj Tiwari when you are so not. she finally took a picture with me and Oh, went her wow. way. Same thing Posted on happened. social media also, but not Huh? tagging you, but the actor. Maybe she posted it on social media also that Maybe she she was did. a celebrity.
American woman. I didn't know where she lived. Wow. Yeah. The same thing happened Amazing. in Dubai. I was in Mm-hmm. Dubai recently, अभी पिछले महीने, and रात के 2 बजे 3 बजे हम लोग लेट पहुंचे थे दुबई, लैंडेड देयर एंड वी वर लुकिंग फॉर सम मिल्क एंड समथिंग, किसी ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ था, तो आई वाज देयर विद माय फ्रेंड्स एंड दे वहां 2 यंग दुबई की लड़कियां, लोकल लड़कियां आई मेरे पास, यू आर ए फेमस बॉलीवुड एक्टर राइट? And I looked at them and I knew exactly what they were talking about. They didn't know the name, right? So I said, uh, if you want me to be, I can be, but I'm not. so, so They the, didn't believe. They didn't believe that. I believe they they didn't thought that believe you're that. They just. went out and then they came Mhm. back 2 minutes later and they said, yes, you are. Yes. you lie. You don't ऑटोग्राफ have ऑटोग्राफ लिए, क्या नाम लिखा? नहीं, ऑटोग्राफ नहीं लिए। तो वो यंग लड़कियां थी, दे डिडंट नो हाँ, द नेम ऑफ द एक्टर दे वर वाओ। टॉकिंग अबाउट। तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग शॉपिंग करके बाहर निकले तो देयर वाज अनदर वुमन, देयर मदर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड शी सॉ मी एंड शी दोस गर्ल्स वर Mhm. विद हर, शी सेड आई thought you were, you know who. Yeah. Hmm. I said, Mhm. okay, yeah, I know who you're talking about, but I'm not that. Who is that person? Who is that? Amitabh Bachchan. So they Oh, were thinking of Amitabh Bachchan for some reason. I said, okay, because of because goatee of and this, yeah, uh, goatee and all that, yeah. yeah, yeah, So, and your so that's the your best height. compliment I have received. Yes. Oh, that's Nothing to good. do with Good, me. good. तो कभी किसी ने कोई इंसल्टिंग कमेंट भी दिया है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट की बात हुई, कभी किसी ने कुछ ऐसा कहा हो, मनोज तिवारी अगेन सेड, "ओह माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट?" I don't know. I don't remember anything. A lot of people give lots of compliments. I'm not saying that, but I don't Mhm, remember that will stick out in my mind at all. mhm, Really, I can't mhm, say that. Yeah, uh, Amol Palekar said lots of good things, which I mhm, can't say, but I think that was a compliment when he said a couple of good things. So that's all. I take it, and I don't know. I have problem accepting compliments. I mhm। really यू यूज्ड टू इट, don't do आए them. दिन होता है, रोज की बात है मनोज नहीं तिवारी नहीं को नहीं 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 कॉम्प्लीमेंट मुझे मुझे बड़ा करना। मुझे बड़ी शर्म आती है, आप चाहे माने चाहे ना माने। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है when somebody gives me compliments. I don't know. दैट्स मॉडेस्टी, दैट्स I गुड, don't know गुड, if that's it. मैंने सीखा नहीं कभी how to accept it well. But yeah, a I lot of think that's compliments. upbringing also. Sorry. That's our upbringing also. Back in we are like in Maybe, a yeah, very yeah, Indian household, mediocre household. तो हमारी आदत नहीं yeah, होती है कि इतना कोई हमें yeah. चढ़ा के रखे. Right, right. तो we cannot हाँ, accept compliments. It's yeah. possible. हाँ, It's बचपन possible. से बचपन से लोग गालियां देते रहते थे, ए क्या पता नहीं है क्या करता है। कुछ आता जाता नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्स की आदत नहीं रही फर्स्ट है। डिवीजन भी नहीं आता, पढ़ाई लिखाई नहीं एग्जैक्टली, करता। एग्जैक्टली। राइट, यू वर जस्ट बाय अच्छा कितने मार्क्स आए आपके एग्जाम में। राइट, राइट। बट लेकर डिफरेंट। आज तक मनोज, have tell me about the people who you look at them or you looked at them and you thought, okay, they are meaningful people in my life or they have taught me something. Just the three most important people in your life, if you were to name. So I can tell you the people who have shaped my life. Not your parents or anything. मतलब, apart from Not family, apart parents from तो parents होते and हैं. all that, जी, outside जी. of parents and things. Yes. Uh, so there were I was always influenced by good actors. I was so much influenced with the talent. जब मैं देखता हूँ ना, Hmm. good example is Manoj Bajpayee. I look at Manoj Bajpayee. I look at Absolutely Shyam, phenomenal. Shyam Benegal. I look at Yeah, not that he's an actor but director. Uh, yeah. Nasiruddin Shah. So they were like my idols. तो Yes. इनको समझ लीजिए पूजा करने लायक थे मेरे लिए, because they बिल्कुल. bring so much of talent, and ये talent Absolutely. as an actor I know ये talent खाली ये जीन्स से नहीं आता है ना? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, and where these Right. people have come from,
एंड इफ यू लुक एट यस, मनोज बाजपेयी पूरा एक छोटे से गांव से निकले हैं, राइट? बिल्कुल, नसीरुद्दीन शाह वाज नॉट अ बिग मैन, ओमपुरी से, ये सब छोटी छोटी जगहों से निकल के कहां से कहां राइट, पहुंचे हैं। So राइट, these people are, so I can't name one person, but I would say this group of people have people, really natural influenced. actors जिसे कहते हैं, Yes, they're not actors, actors. they're Yes, natural, they n- project themselves on screen. right, right. So How they yeah, have evolved from where they came from and how they made themselves to be the mhm, world-renowned actors and actresses. yes, The other people who have influenced are the some of the writers. Like I love poetry, just mhm, अपने पढ़ने उड़ने के लिए। तो जैसे बच्चन जी हुए, प्रेमचंद जी हुए, तो हुँ, ऐसे राइटर्स को पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता था बचपन में, अभी भी लगता है। लेकिन इन्फ्लुएंस जो था ना इन लोगों का था कि ये कितना अच्छा लिखते हैं इन लोग, राइट? So these people shaped my liking for the mhm, literature and acting and professional life तो खैर जो बनी वो बनी, लेकिन these type of people influenced me a lot. that's good, and Politically, I'm sure they've influenced a lot of theater related and actor and even common people, common common man. people, Yeah, yeah, yes, yeah. The way the they teachers, looked at life, way they handled it. right? And I all of have them were seen this amazing. And I'll person add Irfan Khan to that group of people also. Irfan exactly. It's Khan. not, yeah. Mm. There's so many of them. There's so many of them. Yes. Nana Patek, so another one. Nana Yeah. Padekar, yeah. Yes. So, Yes. so these people and singers, obviously singers, any talented person, I'd say, talented. I don't use it loosely. Mhm. I am very particular about. I don't call everybody talented. I Mhm. call very गिने चुने लोगों को मैं talented समझता हूँ. Talent सब में है. I Mhm. I don't think कि मुझ में कोई talent है. When I look at these level of people, that's what I call talent. कि मतलब Talent. Right. जिनको लगे कि आप भगवान के पास पहुंच गए, ऐसे Ji. लोगों को पढ़ के, सुन Totally. के, देख के, जब वो Mhm. फीलिंग जब मुझे आ जाती ना, वो मेरे लिए रिलीजन है, वो मेरे लिए भगवान है बिल्कुल. उस टाइम पे। तो 100%. दैट्स 100%. व्हाट इन्फ्लुएंसेस मी। I think हमारी दोनों की genealogy trace करनी पड़ेगी because I think like you too, and I look. Uh, uh, I'm just listening to you, and मुझे लगता है कि oh yeah, I do that too. Oh yeah, I think like यस, that too. So पता नहीं, maybe 7 gens ago we were brother and sister. Who knows? यस, प्रोबब्ली इन सम लाइफ इन हो सकता है, हो सकता है. No, I I I truly wanna. believe in soul. I truly believe in souls. I truly believe Yes, in soul I system. Soul absolutely. system. Yes, Yeah, yes, soul तो होती है तभी right. else Yeah. how else do you get The, life? So the life that cycle of it. life Yeah. is called the soul. Yeah. Yes, Yeah. and it वो it changes आपने bodies. आपने वो किताब पढ़ी ब्रायन वाइज वाली, ब्रायन वाइज की मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स? इफ यू हैव नॉट रेड मैं इट, रीड किताबों इट। के मामले में मनोज जी मैं बहुत ही किताबों के मामले मेडिकल कॉलेज की इतनी किताबें पढ़ के इतने पक गए थे कि मैं हाँ, किताबें बायोग्राफीज़ पढ़ने में इंटरेस्टेड रहती हूँ कि जैसे किसी हाँ, की ऑटोबायोग्राफी मोस्टली ऑफ हाँ, सिंगर्स एंड एक्टर्स की, और जो फ़िल्म से जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली गायकी से जो जुड़े हुए हैं, उनकी मैं जुड़े हुए बायोग्राफी हैं। हाँ, पढ़ना पसंद करती हूँ। बट एनी फ़िक्शन और कुछ भी ऐसा हो तो फिर वो वहाँ तक yes। मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। ये शायद मेरी कमज़ोरी है कि मुझे रीडिंग नहीं, का शौक नहीं है हर आदमी इतना। हर कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, हम लोगों को फिर से जी। वापस आना है इसी के हाँ, लिए। दूसरा जन्म नहीं, 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 हाँ। दूसरा जन्म नहीं चाहिए। इसी जन्म I में। know I will come back no matter what. Oh, well, that Want depends is a, upon what's the position of your Ketu in your Kundali. So, um, yes, that that's another podcast altogether. yes, कुछ whimsical से क्वेश्चंस हैं that I would like to ask you. आप इतने sure, लोगों से मिलते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है बड़ा, आपने बचपन से लेकर अब तक आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोवर्कर्स में, सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है। तो मैं आपको कुछ जॉब्स देना चाहती हूँ कि आप अपने किस रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी जो भी हो आपकी ज़िंदगी में, उनको ये जॉब
देनी हो तो किसको देना पसंद करेंगे? वेडिंग That प्लानिंग, sounds interesting. वेडिंग प्लानिंग। Wedding planning, I'll give it to two people. One is my daughter, the other one is my niece. They are very similar. They are almost like twins, and they are perfect people for wedding planning. Great. Entertaining the guests during a party. Uh, my sister, who's no longer with us, but she was a perfect hostess. Mhm. Perfect hostess. So she's entertaining ऊपर Yeah, अभी। she's entertaining up there somewhere. Yep. Good, good, good. Gossiping. Gossiping. I have many family members. I don't know if I can name them or not, but That's okay. They know who they are. yeah, or Okay, they may don't not be here anymore. So yeah, Dance choreography. dance choreography. That's interesting. I have a lot of friends actually who are very good dancers. जैसे वो हमारी नलिनी है, नलिनी मिराजकर is a good dancer. Yes. अमृता है, Mhm. बहुत सारे, there are so many of my uh, यार नाम भूल रहा हूँ मैं. There are so many people who are dance choreographers, very good choreographers that I Mhm. know in my Good. circle. One person you would pick to design your wardrobe. Saimi, He is very well dressed. exactly. Saimi Yes. is my wardrobe designer. Yes. I think I can hire him too. One person you would call when you are stuck on a highway, somebody who you think will rescue you when your car breaks down. Prakash Saraf and Yatin Gola. Good. A person who has blind faith in you. मनोज uh, कुछ भी कहेगा वो पत्थर की लकीर. my best friend Chetna Gola. Amazing. Best dressed film actor. Uh, I think Shah Rukh, Shah Rukh probably. Khan. Shah Best Rukh dressed. Khan. Yeah, I his wardrobe also. He's Yeah. stylish. I would say he's Stylish. stylish. I won't Very, say, I don't know very best, stylish. what best is, but most stylish, Mm-hmm. I would say. He Yeah, has a good sense of stylishness. good. After you have had a conversation and you candidly may have said something wrong or something that you thought offended people, how long does it take you to go back to them and apologize? Just imaginary. Generally, I would say 2 to 3 days, maximum 1 week. Maximum 1 week. Good. Generally, if I know I offended, the Mhm, next day I send them a message or call or talk to them, whatever, depending on the type of person. mhm, Generally, I will sleep over it and I will frame what I should say mhm. honestly and genuinely, and I say that. No, that's good. That's good. Yeah. Wonderful. How well do you secrets? How well do I? Keep secrets. Very well. Good. If you tell me some secret and tell me that no one on this earth should know that, it will burn with my body. I can Fun with your assure you. body. Wow. Yep. मनोज हमारा सच में कोई कनेक्शन ढूँढना पड़ेगा। मे बी हमारी कोई मम्मी थी एक सी। अभी पता करते हैं. पता करते हैं। I know genealogy. We should do that. What, in your opinion, what will break up the friendship first? Talking behind their back, borrowing money, never returning. Talking behind their back. Money has never been an issue for me. When I give somebody some money, I don't expect it back really. That does not mean everybody now comes and borrows money from me, but but talking at that, तो मैं as I आ said रही हूँ मैं earlier, आ रही हूँ I'll be there, okay? Check ready रखना मनोज. You can forget about it. you will come here and write me a check by the time you leave.
So don't worry, come, come on over. Oh, that's funny. If you could live anywhere in the world, एक place जिसमें मनोज तिवारी को जाके रहना है कि मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह जाके रहना चाहता हूँ, व्हाट्स दैट प्लेस? सो मैंने अभी दुनिया बहुत नहीं देखी है, लेकिन जितनी देखी है उन सब जगहों में से इटली probably there is Cinque Terre. This is a place or area like Amalfi Coast on the south. This is on the north side. Uh, I will probably go and live in one of those villages. It's They good. are the most beautiful Yeah, beautiful. surrounding. Yeah. It is so pretty over there. Yes. I Italy love means it. actually I The can live Venice, anywhere. Florence. Yeah, we've been Yeah. to Amalfi. We haven't been to, but we were almost there. Yeah. Pompeii and that. Yeah, Italy Yes. in general is very, very beautifully made. Venice is my dream city. Oh, Love that. yeah. Just walking So, over the canals, just walking it. I don't like to drive yeah, everywhere. I like to exactly. walk to the Yeah. corner store, get some groceries, If and if you get yeah. a chance, I don't know if you've been to Sicily. The second place would be, which is Mm-hmm. very much like this Sicily. one. In, Yeah. In Sicily, there is a place Mm-hmm. outside of Syracuse, maybe a couple of hours, place called Taormina. Taormina Mm-hmm. is a place you must visit and go and live there for a few days. That Mm-hmm. is one of the most beautiful places out among these two or three places in That's Italy. wonderful. That's wonderful. And the last question for today. Pick a historic figure who is no longer alive and you want to have coffee with that person. Who is that? Any person you're talking about in any And field, or just pick one person. Manoj Tiwari is looking at heaven or looking at just anybody who is no longer alive. You will pick that person to have coffee with. okay, I hope people don't take it for an. There are many people, obviously, for anybody else. As an actor, I will call Irfan Khan and have a coffee with him. But from historical point of view, I just thought about it. I never Mhm. thought about this before, and I don't know why it came to me, but it came to me because of some reasons. If I could have a 1 hour coffee with Mr. Jinnah, I would love to have Uh-huh. coffee with him for many reasons to get my answers of so Mhm. many things that changed the history of India and Asia altogether. Right, That right. one person changed the geography of that Asian Mm. subcontinent. I would Right. like to sit down with him and have a conversation with him and Yes. find out what Why? really Yeah. happened and What read it? Right. Because we why read it happened. everything in the history books. It may not be Yes, true because yes. there is their version, our version, and the third true version that lies We have elsewhere. heard everything about Gandhi. We have heard everything about Nehru, right? Yes. The third Yes. person we have not heard No, much about. That I it's don't you. think he wrote Uh-huh. autobiography. At least I don't know of. Mm-hmm. So I would like to meet him. That's amazing, Manoj. Nobody has ever thought about it. He thinks from his perspective and what Yeah, was going through his mind. yeah. Yes, And that's amazing. Very, very biggest interesting. the dichotomy of Jinnah's life is that he was not what everybody believes he was, right? Jinnah was Possible. not a practitioner of Islam or anything. Jinnah was not Mm-hmm. about dividing India. Mm-hmm. Who was Jinnah then, right? Why did he divide India really? So I have a book that's written by Ram Manohar Lohia, Mhm, and it's titled "The Man Behind India's Partition." mhm. I'll give it to you one day to Okay, read. please Yeah. do. So Please that do. will probably give you some of the answers that you're looking for. Yeah. Yes. Okay. I So would love to that'll read be that. good. Okay. Anything else that we have left behind? Any questions that you thought that I will be asking you and I have not? Please feel free to ask yourself.
So I love to talk about philosophy in general, human philosophy. Someday we will have a chat just about that. Maybe you and Absolutely. me, and maybe a panel of people. We should we should bring some big questions and talk about Yes. those big questions in life, right? Uh, Perfect. that will be an interesting topic for you, and I will Yes. implore you to bring pick handpick people and do Yes. some discussion on philosophy in that. Absolutely. Let me know when, because that will be a great video cast when we can bring like-minded and people who are experts in that their fields to Yeah, talk about general, because not just for our conversation's sake, but people can learn something from that, yep, something that they can derive out of that. That's a good thought, Manoj. I think that yep. broadcast has brought up very important subjects to be studied later on. And a lot, it's been an interesting talk so far, and hopefully we can do Manoj part two. Um, Not Manoj part two, but yeah, something that where I'm something, maybe yes. part of it as well. Yes, Yep. absolutely. All right. Thank you so much for coming to the Me, broadcast today, Manoj. It's been an absolute pleasure to present you to our community here, and we'll meet again soon. Thank you. it's been my pleasure. Thank you so much for Thank inviting you. me. Thank Appreciate you it. so much. Thank you.